So starting with the party, our first question is the word given below are written using a particular font. Identify the digit that does not belong to the same font. So they have given, here is the sentence, Vectrol, Bandit, okay. इसमें हमें पर्टिकुलर फॉन्ट दिखाया गया है जिसमें कि दे हैव प्रोवाइडेड सेरिफ फॉन्ट. सेरिफ फॉन्ट बेसिकली उस फॉन्ट को कहा जाता है जिसके एज में सम काइंड ऑफ नॉट निकला होता है. हियर वी कैन सी, ओके. सो हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो कि सेम फॉन्ट से बिलोंग नहीं करता है. सो आंसर विल बी 2 हियर. लाइक द शोन बिलो इज अ क्रॉस सेक्शन which is revolved to 70 degree around PQ axis to create a solid. How many surface will be resulting solid? How many surface will be resultant solid have? So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ सरफेस काउंट करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना रहता है कि जो एजेस है उससे सरफेस काउंट करना है. लाइक दो एज जैसे ये और ये एज मिला गया है तो दिस विल बी काउंट एज अ वन surface and this will be count as a one surface. But अगर सेमी सर्कुलर or सर्कल काइंड ऑफ शेप दिया गया है सो सरफेस विल काउंट ओनली वन. तो पहले तो हम जो गिवन शेप दिया गया उस शेप के सरफेस काउंट करते हैं. ओके, सो दिस विल बी काउंट एज अ वन, दिस विल बी काउंट एज अ 2, 3, 4, 5 एंड हियर वी कैन सी जो सेमी सर्कुलर शेप है वो कंटिन्यू हुआ है विदाउट disturbing the edge. Okay, so this will be count as a 5 only here and this will go to the till here. Okay, then this will be 6, 7. Okay, total number is a 7 for one surface and this circle is a count as a 8. So this will be become 8. Okay, and after revolved, so first we can draw a axis here like this. Okay, and the surface will be revolved to the 270 degree like till this. Okay, starting with this point and going to this point. So there will be surface of here one surface and this will be one surface. Okay, so this will be 9th one and this will be 10th one. Okay, so total number will be 10 only. So going to the third question, shown below is a strip of a paper which is folded multiple times. How many red pawns are placed on the same side of paper as a blue pawn? Okay, so basically इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं जो कि सेम साइड पे दिए गए हों. ओके, सो आंसर विल बी 9 हियर. देन फोर्थ क्वेश्चन इज shown below is the image of multiple footwear items. How many complete pair are there? So इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बेसिकली शेप्स को काउंट करके नोट कर सकते हैं रफ पेपर में और एल्स इन अ माइंड वी कैन कैलकुलेट हियर. लाइक let's calculate. This red pair is a one pair. Okay, so we can cut here one pair. Then we can see this one second, then third, fourth, fifth, then this brown one, sixth, seventh. Okay, then eighth, ninth, then this one 10th, then shoe last one is 11 and left footwear जो है उनके pairs नहीं visible है, so answer will be 11 only. So fifth question is shown below is a configuration of an isosceles triangle sliced into 8 parts, each of these same height. Well, first and last part of a triangle remained fixed. Remaining part have been displaced horizontally by multiple of 0.5 centimeter. What is the area of gray portion? So basically इस क्वेश्चन में हमें शेडेड पार्ट जो ये वाला है इसका एरिया कैलकुलेट करना है. ओके, एंड दे हैव प्रोवाइडेड 8 slices with the height of 1 centimeter. So here we can mention this height will be of 8 centimeter. Okay, and this will be also 8 centimeter and
we can divide this triangle with half and this rectangle with the half. So here will be bottom का जो dimension होगा, this will be half of the 8 centimeter. So we can write here this will be 4 centimeter. Okay, so we get here this rectangle portion and this triangle portion that is covered in a shaded part. We can see अगर जो slighted parts है उसको arrange किया जाता है, so we will get the particular triangle here. अगर उस sliced part को particular triangle में convert कर दिया जाता है, so shaded part will be one triangle area plus one rectangle area. So here we can calculate the rectangle area, like 4 cross 8 will be 32 centimeter square centimeter. Okay, and triangle area will be 60 centimeter. Okay, so we can calculate rectangle area here with dimension of 4 centimeter cross 8 centimeter will be 32 square centimeter. Okay, and triangle with 1/2 cross 4 cross height of the 8 centimeter, and the area will be 60 centimeter square. Okay, and after calculating both shaded area, answer will be 48 centimeter square. Okay, question is shown below is the arrangement of closely stacked sphere. Assume each one to be in a contact with its immediate neighbor. What is the total number of a point where a sphere touch each other? So here we can see they have provided sphere in a 4 level. Okay, फर्स्ट लेयर जो कि बॉटम लेवल है उसमें इन्होंने 16 स्फीयर प्रोवाइड किया है, देन नेक्स्ट में 9 स्फीयर, देन सेकेंड लेवल में 4 स्फीयर, देन टॉप में 1 स्फीयर. सो टॉप व्यू से देखने पे हमें पता चलता है कि 2 स्फीयर एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ. ओके, सो जो फोर्थ बॉटम लेयर है फोर्थ वाला, हियर वी कैन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ टचिंग एरिया. देन सेम फॉर द this third level, second level and first level. So basically हमें second and third layer के touching area calculate करना है for the top view. And after calculating the top view with the elevation, we can see जो 3 spheres है एक दूसरे को 3 places पे contact कर रहे हैं. Yes. So after calculating all the touching area, the total number of touchable surface will be 96 here. Okay, 7th question. Shown below are the 3 perspective view of a solid object. How many surface does the object have? Assume hidden surface to be flat. Okay, so here we can see they have provided 3 views of our object, and this object and this object is the same view with front and rear perspective. Okay, and this is the side perspective. So first we calculate the first view surfaces. और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना रहता है कि जो कर्व सरफेस रहता है उसे एक सरफेस काउंट किया जाता है, लाइक दिस वन. या सो लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ सरफेस. दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are the visible surfaces. Okay, then ये जो हेक्सागोनल वाला शेप है उसको अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वी कैन सी दे हैव सम कर्व सरफेस इन अ अदर व्यू, सो वी विल कैलकुलेट दैट sometime after some time. Okay, then in second view, so this is a rear view of a first object, this part. Okay, so this is a 1 2 3 4. Okay, then 5 6 7. ओके, ये जो लास्ट की रियर व्यू है उनकी सरफेस हमने फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं किया है, इसलिए ये टोटल सरफेस विल बी 7 हियर. देन नेक्स्ट इज
this is end view of a first object. This is a part of this one, okay, and this is related to this one. So total number of surface here will be 1. This part has been calculated here, okay. So 1, then 2, 3, 4, 5, 6, okay, 6 we have calculated. Then let us calculate the hexagonal surface. So this will be 1, 2, 3, 4, 5, okay, 23. That was visible to us, okay. Then next, this hexagonal is left, okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is counted as a 6, and this surface is counted as a 1. So total answer will be 30 here. Yeah. So next 8th question is, monospaced font is a font in which all characters are exactly of same width, okay. A document uses a monospaced font for type setting where each character is exactly 0.6 centimeter wide. A text line in this document contains only 10 words, where each word contains 6 characters. What is the length of the line in a centimeter?